the net acceleration for non-UCM. सर अच्छे से याद नहीं है। बोलो। पर सर मतलब ds y कंपोनेंट है और क्या था, हाँ, और d ओमेगा और r हमारा वो रहेगा z और x कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। तो फिर सर क्रॉस प्रोडक्ट रूल से जो जो वो रहेगा मतलब ds इज इक्वल्स टू d थीटा बाय r, d थीटा इनटू r हो जाएगा। Okay, fine. So it was a relation between linear displacement, angular displacement, and position vector. So ds bar is equal to d theta cross r bar. उससे हमें क्या रिलेशन मिलेगा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे क्या मिलेगा? हाँ तो सर मतलब पहले तो डिस्टेंस है थीटा, तो फिर डिस्टेंस से वेलोसिटी आ जाएगी, बोथ एंगुलर एंड लीनियर। Very good. So what's the formula you'll get it based on to that? एक सेकेंड है सर, देखना मत। मिरर में ज्यादा ठंडी होगी ना, खारकर में भी ज्यादा ठंडी होगी ना? यस सर। ऑल ओवर मुंबई में एलआर के पास का रास्ता नहीं दिखता सुबह में। Okay, but no, the reason is Mira Road is the slightly go towards extreme, और वहाँ पे it's more closer to the east is part of it, and Kharghar is also closer to mountains. Is it? Anaita? Yes, sir. Okay. यहाँ पे तो it's not to that extent. You're in the western suburb. थोड़ा बहुत वो sea की वजह से थोड़ा सा cool waves होते हैं. Not to that extent. Okay. Yes, Izar, तुम क्या बोल रहे थे? ds bar is equal to d theta cross r bar. अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ with respect to time, तो तुम्हें क्या मिलेगा? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। Absolutely correct. That is t theta by dt cross r हो जाएगा. ये हो जाएगा v bar is equal to omega bar cross r bar. This was, did we derive this part of it? कर लिया था ना हम लोगों ने? हाँ स्टूडेंट्स, ये किया था ना हमने? हाँ सर। अभी मुझे इसमें से नेट एक्सेलरेशन के लिए कैसे मिलेगा? फिर से डिफरेंशिएट कर। Okay, and what is the rule you'll be using it? Product rule in derivatives? यस सर, प्रोडक्ट। Okay, so that will be dv by dt. Yes, sir. Differentiating omega with respect to time, keeping position vector constant, plus keeping omega constant, differentiating position vector with respect to time. Now, this becomes your acceleration net. What is it? Alpha. dv by alpha. How is alpha? What is alpha called as? एंगुलर Angular एक्सेलरेशन। acceleration. What is the definition of angular acceleration? Angular acceleration for a body performing circular motion is defined as rate of change of angular velocity with time. Getting it? So it's d omega by dt we consider. So over here, this is alpha cross r plus Omega this is into V. into dr by dt is differentiating the position vector with respect to time. Any change in position, the position of the particle goes on changing at every instant, and at that position, the body will possess some velocity. Now, what is alpha into r will give me acceleration tangential, and this is going to give me acceleration radial, also called as acceleration centripetal. This is your net acceleration. Absolutely correct. Izar, अगर सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई बाय मास कर दूं इनटू m इनटू m इनटू m, तो क्या बन जाएगा? ये फोर्स उसका will be equal to force tangential plus force centripetal. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। Okay, and in the last lecture I gave you about the vector notations of the students by using right hand skew rule. Students? yes sir। Yes, sir. No, who said it no? Somebody said it no. Who's that person who said it no? Sir, I and Subh said yes. Okay.
बट somebody said it, no ना, मैंने वेक्टर फॉर्म में बोला है ना, जैसे यही मैंने वेक्टर फॉर्म में बोला था लिखने के लिए। फिर v बार इज इक्वल ओमेगा बार क्रॉस r बार, ये वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला था। करेक्ट रिलेशन इन वेक्टर नोटेशंस फॉर क्रॉस प्रोडक्ट्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अल्फा क्रॉस r लिखते हैं, ना कि r क्रॉस अल्फा। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को ओमेगा क्रॉस v होता है। फिर एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू r क्रॉस p। कुछ याद आ रहा है? ये किया ना मैंने स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. या क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज डोंट डू लाइक दैट। ओके, ऐसा करोगे तो मुझे ऐसा बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। ओके, सो आई डिड दैट पार्ट ऑफ इट। Okay, and the last formula I gave you was torque. Torque is equal to R cross F. Moment of force is equal to momentum into the force applied. Okay, so we got the relation. Students, अभी जितने भी हम लोग ने circular motion के जितने भी mathematical formulas थे, basics वाले, वो सारे हो चुके हैं students. So Sir, these were the yes. सर और आपने वो एक फॉर्मूला कराया था, फाई इज इक्वल्स टू tan -1 एफ टी अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, PU मतलब उसका मुझे थोड़ा समझा नहीं सर। आई वांट PU वो क्या था? PU -1 बोल रही है? See the way you're speaking. PU सर tan इनवर्स। अच्छा हुआ तुम लेक्चर्स में नहीं हो। लेक्चर्स में होते ना, वीरा रोड ब्रांच में हैं। तो गए काम से, है ना? ओके, टैन इनवर्स है ना वो, तो वो क्या था? फी इज व्हाट एग्जैक्टली फी आई गेव यू? फी वाज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ना, क्योंकि दो एक्सेलरेशन है। कोई भी अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसको दो एक्सेलरेशन होता है, एक टैंजेंशियल होता है और एक सेंट्रीपिटल होता है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो उसको दो एक्सेलरेशन होंगे, एक रेडियल और एक टैंजेंशियल। तो उनका नेट कहाँ पे होगा? नेट कहाँ पे होगा सर? इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो पैरेलल, टेल है, टेल इट विल बी अलोंग द, यस नेहा बोलो, इट विल बी अलोंग द Diagonal. diagonal, and this becomes the angle phi. So what is tan phi? Opposite upon adjacent, so tan phi is equal to tangential upon centripetal, so phi is tan हाँ inverse. सर, ओके सर, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली था क्या स्टूडेंट्स? दो वेक्टर्स के बाद में दो वेक्टर्स दिए हुए, दोनों 90 डिग्री पे है, तो हम लोग ने पहले तो रिजल्ट निकाला। और जैसे भी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर्स आते हैं एंड दे गिव यू द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यू कैन यू टेल मी हाउ डू यू लोकेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? कैसे कैसे तुम फाइंड आउट करोगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? और हाउ डू यू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? फास्ट नेहा, फास्ट बोलो। सर बाय Angle between two heads or two tails. वेरी गुड, ये है मेरा स्टूडेंट, देखा? दिस इज व्हाट इट इज। तो जब भी तुम्हें एंगल को लोकेट करना है तो स्टेट ये बेसिक्स है। कैसे निकालोगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? सर या तो दो हेड्स मीट होते हैं या दो टेल्स मीट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो यहाँ पे भी हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वाज 90 डिग्री, तो हम लोग ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके भी फाउंड आउट द रिजल्टेंट। अभी उसका डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट चाहिए। तो अगर डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट चाहिए तो इसमें हम लोग ने क्या किया था? कुछ फॉर्मूला याद है? tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta. Is that clear? Yes, sir. Okay. Sanjeevani, are you there, Sanjeevani? Can you unmute, Sanjeevani? Sanjeevani, are you there? Sanjeevani, are you there? Please do reply.
and just now Swayam had come. Swayam आया था और वापस चला गया. Swayam या Swayam. Your batch ना Swayam पहले sir, वाला. हाँ sir, हाँ. He never attends only sir, not only of your lecture. मतलब chemistry और physics ऐसा मतलब नहीं attend करता है वो ज़्यादातर. और मनोमय भी अटेंड नहीं करता है ना. Sir, Manomay का I don't know. Sorry. There is a boy called Manomay ना. हाँ, but I don't have much information about him. Okay, because just now he came in and then he left. I know why don't and he's from Mira branch. No, so he's from Karir. Oh, Khargar. So I need to speak to the Khargar head in that case because the parents should be aware about that. Okay, students. Sanjeevani, why you are not replying, Sanjeevani? She was also absent. Okay, students. Now please pay attention. We learned about all these relations students for particle performing circular motion. Next, students, did I derive the formula for acceleration centripetal by vector notations? Negative omega square into r by the method of calculus, students. No, sir. No, sir. Okay, did I also derived velocity and position vector mutually perpendicular? Students, V and R are mutually perpendicular. Did I derive that also? नहीं sir, last यही किया था. Okay, fine. Okay, now let's move further, students. So in the last lecture, students, see these people are coming in right now. I don't know why is it so. Sir, Yes. last lecture में tan inverse वाला formula तक ही किया था. Okay, fine. Aishman, were you present in the last lecture, Aishman? Arshan? Arshin? Aishman? They are coming to their comfort, sir. This is something wrong. Okay, students. Let's move further, students. Now we derive the formula for acceleration centripetal. Students, acceleration centripetal we consider is for a body performing circular motion. Yes. Were you present in the last lecture? Who's that? Arshil, why are you late? Sir, I have joined from my laptop right now. I was present from before. Okay, fine. Please, students, if you're not replying, I'm removing students. Huh? Ayush, Ayushman, if you're not replying, I'm going to remove it. Either you can chat and reply, otherwise I'm going to remove the students now. Arshan, now see, now instantly a text message comes. This is not done.
You were absent here in the last lecture. See, no reply. Okay, students, let's move further ahead. I told you about, no, after some time, I'm going to remove these students. Those are not replying. I'm giving them some time. If they don't reply in a specified time, I'll be removing these students. Okay. And the call will go to the parents and especially to the dad straight away. Okay, listen carefully, students. We'll be going with respect to acceleration centripetal ka derivation. Students, acceleration centripetal is an acceleration which is always directed from the particle towards the center of the circular path, students. And this is for a body performing circular motion. हम अब इसका derivation करेंगे, students. So for a body performing circular motion, let us say that is a body performing uniform circular motion. Okay. We are trying to go for the formula for acceleration centripetal, students. And the formula what we are going to derive will be, students, it's negative omega square into r. Students, ये जो formula हम derive करेंगे ना, ये formula होगा by calculus method. Acceleration centripetal एक radial acceleration है. R is position vector. ये जो negative sign है वो क्या दिखाता है? Negative sign दिखाता है that acceleration centripetal and position vector. देखो, what exactly it means? What exactly? ये क्या बताता है? Anybody can tell me? What does negative sign represents over here? Students? Circular. Inversely proportional. Inversely? How can it be inversely, my dear? Inverse variation तो ऐसा होता है ना? ये inverse हुआ, ये direct हुआ. इसका graph will be hyperbola. इसका graph will be a straight line. इसका graph अगर तुम लोगे y और x का, तो graph hyperbola होगा. और ये होगा straight line graph, क्योंकि y is equal to mx plus c. ये inverse variation है, direct variation है, students. मैंने देखो negative sign, acceleration centripetal दो arrows. Are these two arrows are in the same direction, opposite direction? Sir, opposite. Opposite direction. If I say opposite direction, that means are they parallel or anti-parallel? Anti-parallel. Of course, that means this shows that acceleration centripetal and position vector both of them are in opposite direction. Opposite को represent के लिए मैंने negative sign डाल दी. क्या ये clear हुआ, students? Yes, Is sir. this clear? Okay. So body performing uniform circular motion, we want to derive this formula by the method of calculus. So we can now how to go about this. Any object when perform circular motion, students. So I'll draw the diagram for it. Let us say the particle is performing circular motion. So I'll draw a circular path. So the body is performing circular motion. Let us say the body is performing circular motion. ये तुम्हारा horizontal axis हो गया और ये vertical axis है, students. ये है center of the circular path. Agreed? ये जो x axis है, I'll consider this as my reference frame. Students, ये reference line है. Now the particle may be at any instant. Let us say the particle at any instant has moved from here till here. So the particle is over here at point P, students. Now suppose अगर मुझे इसका motion दिखाना है, तो how is the motion? Then you see the motion is anti-clockwise. So the motion is counterclockwise. What does counterclockwise means? Anti-clockwise. Anti-clockwise.
and that is constant. Anti-clockwise motion, and that is constant. Agreed? Is that clear? So the motion is counterclockwise, anti-clockwise, and they are performing UCM. यानी at a particular instant particle यहाँ पे है students. अगर particle यहाँ पे है तो उसका position कौन दिखाएगा? तो मुझे लगा सर position vector दिखाएगा. तो ये हुआ उसका position vector. यानी this particular particle is at point P and it has its coordinate r comma theta. यानी r comma theta क्या हुआ? R उसका position vector हुआ और theta क्या हुआ? So the angle which it forms, the radius vector forming an angle theta with the x-axis reference line. तो ये जो r comma theta ये कौन से coordinates है? तो तुम बोलोगे सर ये polar coordinates है. What exactly these are? Polar coordinates we Polar consider. coordinates. Okay, r comma theta we consider. So now the particle is at point P, and what kind of motion is performing? Sir, it's performing circular motion, but is it clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Is the speed remaining constant? Yes, the speed remaining constant. Now when the particle reaches over here, does the particle has some velocity at that instant? Yes, there is a velocity, and that's the tangential velocity, students. Okay, look at velocity. The velocity of the particle is always along a tangent, so the direction of velocity goes on changing. How is V and R? So V and R are mutually perpendicular to each other. Agreed? क्या ये clear हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now when you move further, students, how do you go about with it? Can I resolve this position vector into two components? Can I resolve this position vector into two components? Yes. जैसे R को हम resolve करते हैं, एक होगा आपका horizontal component और एक होगा आपका vertical component. समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका Rx और ये हो जाएगा आपका Ry. तो in terms of vector notation, can I write down R bar is equal to Rx bar plus Ry bar? हाँ Yes, students, क्या ये sir. clear हुआ? Triangle law of vector addition. ये देखो ना, ये वेक्टर को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो देखो क्या हो रहा है. टेल है, टेल है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर. तो ये हुआ तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लेकिन मुझे बताओ व्हाट इज Rx? Friends, what is Rx bar? R cos theta. Absolutely correct. It's a component. So can I say it's R cos theta, and that is along which axis? So it's positive x-axis. So can I put I cap? Yes, sir. What about Ry? So Ry भी वेक्टर है ना? तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा R sin थीटा. वही कंपोनेंट है, लेकिन एक्टिंग along which axis? सर पॉजिटिव एक्सिस, तो उसको मैं G cap लिखूंगा. तो can I write down this R bar now as what? R cos theta I cap plus R sin theta J cap, and that gives the position of the particle, and it will be that many units. It can be meter, it can be centimeter, it can be millimeter, क्योंकि ये position vector दिखा रहा है. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Students, what are we trying to do? हम क्या कर रहे हैं? We are trying to derive the formula for acceleration centripetal. And you should get this answer that acceleration centripetal हमेशा किस तरफ होता है? Students, ध्यान से सुनना. Acceleration centripetal will be always directed from the particle towards the center of the circular path. अगर particle यहाँ पे है तो ये तुम्हारा acceleration centripetal होगा. Position vector ये उसके opposite direction में होगा हमेशा. Students, ये ध्यान में रखना. अगर particle यहाँ पे है, suppose if the particle is over here, तो acceleration centripetal इस तरफ होगा, will be always directed radially inward. ये होगा तुम्हारा acceleration radial या acceleration centripetal. तुम दो नाम दे सकते हो, radial या centripetal. लेकिन उसका जो position vector होगा वो center से यहाँ पे दिखाओगे, ये इसका position vector होगा. How is both of them are anti-parallel, forming an angle of 180 degree in the direction opposite. क्या ये clear हुआ? Is this clear, students? Yes, sir. Okay. Today Akash is absent. Akash was present na last lecture. Yes, sir.
Okay, Shura is absent, it seems, है ना? हाँ sir. Okay. Now listen carefully, students. Now when you move further ahead, हमें क्या चाहिए? हमें acceleration चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर? ऐसा करते हैं ना, ये जो position vector है, इसको हम differentiate करेंगे. Let us differentiate the position vector with respect to time. So students, if I differentiate position vector with respect to time, so what I'm going to get it? So I'm going to get linear velocity. Change in position. Students, change in position. I gotta get with respect to time. Change in position with respect to time will give me instantaneous velocity. So let us go for instantaneous velocity. So now what I'll do? Sir, ऐसा करते हैं ना, इसको हम differentiate करेंगे. Differentiating both the sides with respect to time. So can I say dr by dt will be equal to what? अगर तुम differentiate करोगे तो right hand side का differentiation क्या होगा? So right hand side का differentiation होगा minus r sin theta I cap plus r cos theta j cap. very good. So over here we'll be differentiating. See, this is u plus v method. So differentiating r cos theta I cap होगा by dt और उसने आंसर डायरेक्ट ले लिया plus differentiating r sin theta agreed j cap with respect to dt, students. So now if I want to go for it, how do I go about? So now let us go for it. This will be v. So it's differentiating r cos theta, r constant. Differentiating cos theta will be minus sin theta into d theta by dt. क्या ये clear हुआ, students? Students, is this clear? Yes sir. Differentiation. Mr. Aryan, why are you so early in the lectures? Aryan, why are you late in the lectures? Ayushman, you didn't reply earlier also. Yes, Aryan, why you are late for the lectures? Sir, I had slept, sir. I just woke up. Sorry, sir. You wash your face and come. I'll take you in. जल्दी से wash your face. Don't just sit like that, okay? नहीं तो कुछ grasp नहीं होगा. और चाय का कप ले लेट. For sure, sir. Okay. Who's laughing? Who laughed? हाँ, ये ईवान किसका है? ये पीयू ही होगी. पीयू तुम्हारा है ना फोटो ये? No sir. ऐसे नहीं करते पीयू. बंदा अटेंड तो किया उसने, शायद पापा ने उठाया होगा उसको. Okay, students. Now देखो, differentiating this r cos theta, the students r constant आ गया. Differentiating cos theta will be minus sin theta. ये d theta by dt into I cap. Agreed? Plus r constant. Differentiating sin theta will be cos theta into d theta by dt and j cap. क्या ये clear हुआ, students? Sir Is this? वो minus sin theta. Sin theta. Okay. Minus how it came. अरे क्या बात है यार. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान. Students, differentiating, that's a formula. Differentiating sine theta will be plus cos theta and differentiating cos theta will be minus sine theta. Integration of sine theta is minus cos theta and integration of cos theta is plus sine theta. Sure, is it clear? Yes, sir. See one thing, it depends on you, how are you as a student in physics. Are you getting it? अगर तुम फिजिक्स को लीनियंटली लेते हो या कैजुअली लेते हो या फिजिक्स को अपनी फुर्सत से करते हो, then take it from me, कभी भी फिजिक्स तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा. आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली. ओपनली फिजिक्स तुम्हें हार्म करेगा एग्जामिनेशंस में. ये टिट फॉर टैट का है. जो बंदा फिजिक्स को रिस्पेक्ट करेगा, अडोर करेगा, एडमायर करेगा, कंसिस्टेंसी रखेगा, then physics automatically will do the same thing. It reciprocates in the same manner. लेकिन जब भी तुम फिजिक्स को अपनी फुर्सत से करना शुरू करोगे या फिजिक्स को टेक इन फॉर ग्रांटेड करोगे या जब भी मैं बैठूं तभी मुझे फिजिक्स आना चाहिए, तो फिजिक्स बोलेगा गेट लॉस्ट. प्लीज स्टूडेंट्स,
do take care of these six. Physics is not a subject where it's a kind of a lollipop. You open the wrapper and you can just try to leak it in that case. It's not like that. You need to really work onto it. और उसके लिए एक consistency चाहिए. और जो बंदा vectors में strong है और जो student is strong in basic maths, they get physics easily at every intervals, क्योंकि पूरे physics में तुम्हारा vectors और basic maths use होता है. So a student who is preparing for engineering certainly will be better in physics because उनके maths के साथ में हमेशा link होगा. They are doing maths consistently. लेकिन जो NEET के students हैं जिन्होंने maths नहीं लिया है और जो basic maths को भी छूते नहीं हैं physics में, पूरे एक मॉड्यूल है जिसमें बेसिक मैथ्स है, उसके फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं करेंगे, उसको छुएंगे नहीं, दे आर गोइंग टू गो डाउन. आगे आगे देखो होता क्या हालत तुम्हारी फिजिक्स में. ये तो कुछ भी नहीं है. When actually you are into the physics part of it further, and when you groom more, when you enter more, when you do more number of chapters, it will be a tough time for those students who are not referring to mathematical formulas. So please ये ध्यान में रखना. Pio, are you there, Pio? Yes, sir. Open your book of calculus and look at the formulas for differentiation. Page number बोल कहाँ पे है? Open the book. Do you have a book module in front of you? No, sir. I have to take it from my cupboard. This is what it is. Students, तुम्हारे vectors और basic maths के टेक्स्ट बुक हमेशा तुम्हारे सामने होनी चाहिए या तुम्हारे बैग में होनी चाहिए जब भी तुम लेक्चर्स में आते हो. पूरे 2.5 साल ये 2 बुक तो तुम्हारे बैग में होनी चाहिए और डेस्क पे होनी चाहिए. You can't just dump it somewhere into the bulk of books. चैप्टर हो गया तो अंदर डाल दिया, वो मॉड्यूल अंदर दब गई है, उसके ऊपर दूसरा मॉड्यूल आ गया है, बस वही निकाल के आ जाना लेक्चर्स में, नीचे वाले को वैसे रख दिया. Don't do like that, students. So now when I speak about velocity, what exactly it will be? Minus sign r, differentiating theta will be omega sin theta I cap. ये होगा plus r d theta by dt is omega differentiate, sorry, cos theta we consider as it is, and j cap. So ये जो formula हुआ ये हुआ velocity, and this formula for velocity will be in certain unit. अगर suppose मैंने इसको मीटर में दिया ना students, if I give you this in meter, this answer will be in meter per second. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Everyone, I'm not teaching one or two. Anaita, is it clear to you? Anaita, are you there? Aryan? Yes, sir. Aryan, are you there? You're not replying. Kushali, Izar, Yes, sir. Veer, Neha. Yes, sir. Neha, what Yes, about sir. you? Saksh, Yes, sir. Rishika. Yes, sir. Okay, Piyu is understanding properly. Okay, तो ये तुम्हारा velocity हो गया. अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे acceleration चाहिए, students. मैं क्या करूँगा? वापस इसको differentiate करो. So differentiating velocity with respect to time, तो क्या हो जाएगा? That is acceleration. तो इसको differentiate करो. देखो मैं directly लिख रहा हूँ, students, differentiation. अगर मैं differentiate करूँगा minus r omega sin theta, तो negative sign तो वैसे ही आएगा. r constant होगा, omega भी constant होगा. Friends, what is differentiating sin theta? Plus cos theta. Cos theta. Theta. Agreed. Into d theta by dt. Students, chain rule in derivatives into d theta by dt. So d theta by dt is omega. Can I put omega square over here and I cap? क्या ये clear हुआ, students? Yes, Students, sir. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Everyone. सर आप फिर से समझा सकते हो? Students, मुझे बताओ, अगर मैंने y is equal to sin theta दिया है और मैंने पूछा students differentiate, तो क्या आंसर होगा? तो क्या आंसर होगा? y is equal to sin theta, differentiating y with respect to theta, तो क्या करोगे?
Yeah, sure, Bizarre. Bolo. Anaita. Neha, can you speak out? Yes, sir. What's the answer of differentiating y is equal to sine theta with respect to d theta? See, Piyu is enjoying. Piyu is literally laughing. No, sir, I'm serious. That even Neha is not able to answer. Sir, it will be d cos theta upon d. D cos theta. My dear, after differentiating sine theta, so differentiating sine theta by d theta will be only Sin cos theta ka theta differentiation will be cos theta, na? plus cos theta Okay. into d theta by dt आएगा और वो 1 बन जाता है. लेकिन अगर मैं dy by dt लेता हूँ तो first I'm going to differentiate dy by d theta and then d theta by dt. ये हुआ chain rule in derivatives. ये हुआ एक chain rule in derivatives. Neha, are you getting it? Yes, sir. Forgot. When I said differentiating y with respect to theta, तो dy by d theta is cos theta और पीछे d theta by d theta आता है, लेकिन वो हम लिखते नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाता है. अगर मैंने पूछा फाइंड आउट dy by dt तो differentiating y with respect to पहले थीटा करूंगा और फिर थीटा को टाइम से करूंगा. तो now if I see differentiating y with respect to theta, यानी आंसर क्या होगा? cos theta. पीछे क्या लिखूंगा? into d theta by dt. तभी जाके मैंने पीछे d theta by dt लिखा हुआ है. देखो, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन किससे है? With respect to time. And this is chain rule in derivatives. Students, all of you all, is it clear with this? Yes, sir. And what is d theta by dt? Omega, because angular velocity is rate at which angular displacement takes place. And students, I have done this in vectors. We have did so many problems in vectors onto this. If you are able to revise this, again, yeah, if you are connecting this again, it's only because of PU. अगर मैं चाहता तो PU को झाड़ देता लेक्चर्स में अभी और कुछ नहीं बताता मैं. उसको चिल्ला के बोलता PU इतना भी नहीं आता तुम्हें, तुम रिवाइज क्यों नहीं करते हो? लेकिन since she raised it, there are some students who were literally had lost this part has recorrected with it. Students, don't do like that. Be in consistency with your books. Don't forget your basic maths. उसका मतलब तो ये है, like a fool I'm just going on deriving it and you are not aware कि what is happening. That's why you give an incorrect answer over here. अभी तक वो बुक लेके बैठी नहीं है सामने और अभी तक उसने क्रॉस चेक नहीं किया फॉर्मूला. अभी तक उसने क्रॉस चेक नहीं किया. अभी कोई दूसरा स्टूडेंट हो तो तुरंत बुक लेके आके क्रॉस चेक कर लेते हैं. ओके, सो डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डिफरेंशिएट का आंसर हो गया. स्टूडेंट्स, इसका क्या होगा? प्लस ये r कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट. व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग cos थीटा? सर इट विल minus sin theta. sin थीटा into d theta by dt which is omega. तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आएगा और पीछे j कैप आएगा. आ गया? Students, is this clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Now can I rewrite it? Therefore, acceleration is equal to negative r omega square cos theta I cap plus to minus r omega square sin theta j cap. Acceleration centripetal. Can I remove negative omega square outside because दोनों में omega square constant है. लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? r cos theta I cap plus r sin theta j cap. First, can you tell me what exactly r cos theta I cap? R cos theta I cap and r sin theta j cap is what? What is that? What is that? Position vector. Therefore, can I say acceleration centripetal is equal to negative omega square and this is my r bar.
So can I say your acceleration, centripetal, and position vector, both of them are in what direction? Opposite direction. This is the formula for acceleration, centripetal, radial inward acceleration. क्या ये clear हुआ students? क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन वेक्टर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिला। और देखो एक्सेलरेशन यही आना चाहिए क्योंकि आर और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ओमेगा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आपने मोशन यूसीएम ले लिया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर थंब इज पॉइंटिंग इनटू योर आई, सो दैट इज पॉजिटिव एक्सिस आई विल कंसीडर। नाउ इफ आई वांट टू राइट ऑन दिस फॉर्मूला इन टू अदर वेज, दो और डिफरेंट वेज है। डू वी नो स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू r ओमेगा? ये तो हम लोग ने डिराइव किया है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? Yes, sir. Okay, relation between linear velocity and angular velocity, so v is equal to r omega. Now ध्यान से सुनना, suppose अगर मैंने r को यहाँ पे v by omega substitute किया, so what is my formula? R को v by omega, so what's my answer? Then this is our acceleration centripetal will be equal to what? R को v by omega, so can I say omega into v आ गया, एक formula ये हो गया, agreed? हाँ या ना? R को क्या किया मैंने v by omega, एक omega cancel हो जाएगा, ये मैंने magnitude में लिखा है, I've written in magnitude. Second, Yes, sir. suppose if I substitute omega as v by r, substitute omega as v by r, तो क्या होगा? v square by r square, एक r cancel हो जाएगा। तो what is the formula for acceleration radial? v square by r। यानी स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल के कितने फॉर्मूलाज है? 3 फॉर्मूलाज है। नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर इनटू r इज अ परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोटेशन। जब भी तुम प्रॉब्लम्स यूज करोगे तो तुम ओमेगा स्क्वायर इनटू r लिख सकते हो। तो एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल इज ओमेगा स्क्वायर इनटू r या ओमेगा इनटू v या v स्क्वायर बाय r। क्या ये 3 फॉर्मूलाज क्लियर हुए? Yes, sir. Yes, sir. अगर इनको तीनों को मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 4 सेंट्रिपेटल, which is mass into acceleration centripetal. Is this clear? Yes, sir. Now if I ask you, anyone can tell me, is this motion circular? Yes or no? Yes, sir. Circular motion के लिए what about velocity and position vector should be at every interval, at each instant? Should they be mutually perpendicular? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर mutually perpendicular है तो उनके बीच में dot product क्या होना चाहिए? What is the dot product of V and R should be? Anybody fast? 0. 0. Absolutely correct. The dot product should be equal to 0 और मैं बता चुका हूँ। देखो वीर ने आंसर दे दिया। Now वीर, can you prove it mathematically? Can you prove it? अगर किसी भी हाल में तुम्हें डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो तुम बोल सकते हो यस मोशन इज सर्कुलर। क्या तुम प्रूव कर सकते हो वीर या एनीबॉडी एल्स यू कैन प्रूव इट ओवर हियर? So using the formula of dot product. So see, we will use the formula of dot product. यस, सो डॉट प्रोडक्ट किसका लोगे तुम? So V and R. ओके, वी का फॉर्मूला है तुम्हारे हाथ में। So magnitude of V dot कहाँ से magnitude. मैग्नीट्यूड वी? सॉरी, मुझे ये प्रूव करना है ना, v डॉट r मुझे 0 चाहिए तो मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए। अगर v डॉट r 0 आ गया तो उसका मतलब v एंड r आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मुझे v का फॉर्मूला है तुम्हारे हाथ में? Yes, sir. का डॉट प्रोडक्ट वी क्या है? cos थीटा होगा, पॉइंट वी आर cos थीटा से। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ना, v का फॉर्मूला ये रहा, सामने लिख रहा है स्टूडेंट्स। ये v का रिलेशन मिला है, ये r का रिलेशन मिला है, दोनों के बीच में एवरीबॉडी फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट। चलो फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट इन वेक्टर्स। So in dot product, what is the component used? Is it sin theta or cos theta? Cos theta. cos थीटा। Cos theta. And in that case, what is I dot I? Is it 0 or plus 1 minus 1? No, sir. I 0. I cross I is 1. Sir, I didn't say हाँ, cross. one. It's a dot product. I dot I. Sir, 1. 1. J dot J. 1. K dot K. 1. I dot J.
Zero. Zero. Oh, Why zero? Why zero? Sir, because they are Because mutually the angle is perpendicular. 90 degree. Okay, so cos of 90 is 0. That's why it is 0. Agreed? Yes, sir. So I dot j is 0, j dot k is 0, k dot I is 0. तो स्टूडेंट्स हमें डॉट प्रोडक्ट में करना क्या है? हमें डॉट प्रोडक्ट में करना क्या है? सर हमें सिर्फ I डॉट I, j डॉट j और k डॉट it को देखना है. यानी आपके हाथ में v का फॉर्मूला है, आपके हाथ में r का फॉर्मूला है. स्टूडेंट्स एवरीबॉडी कैन वी डू मेंटल मैथ्स? बिना लिखे क्या तुम्हें आंसर मिल सकता है? तो बोलेगा हाँ सर, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना तो v डॉट r. तो ये देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स है. अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टर्म आएंगे. 2 2 जा 4 टर्म्स. लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये i डॉट i का आंसर 1 होगा. ये i और ये j तो 0 हो जाएगा. ये j और i वो भी 0 हो जाएगा. j और j 1 हो जाएगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Now if I say I dot I, it is +1. What is my answer of this will be? So I dot I is 1. So my answer for this will be what? Plus into minus minus. Minus r square omega sine theta cos theta. आया ना? R square omega sine theta cos theta I into I is 1. What is j into j is also? 1. उसका आंसर क्या होगा? So plus into plus is plus. R into R will be R square. Is omega there? Yes, sir. Do we have cos theta and sin theta? Yes, sir. So sin theta and cos theta. Now students see, is this answer is in negative? yes, sir. Yes, sir. Is this answer is in positive? Yes, sir. sir. दोनों को कैंसिल होके क्या आंसर आया? 0. 0. So is the dot product equal to 0? Yes, sir. Yes, sir. That shows that V and R are mutually perpendicular. पता चला कैसे प्रूव करते हैं mathematically circular motion? तो अगर किसी ने तुम्हें पूछा प्रूव दैट अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ध्यान से सुनना, और प्रूव दैट द बॉडी इज मूविंग अलोंग इन सर्कुलर आर्क, तो तुम्हें सिर्फ ये प्रूव करना है दैट वी और आर परपेंडिकुलर होंगे, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. भले वो मोशन यूसीएम है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले इनिशियल वो ही बोला है, अगर मोशन यूसीएम है या नॉन यूसीएम है स्टूडेंट्स, हमेशा V and R will be mutually perpendicular because direction of velocity goes on changing for both. लेकिन uniform circular motion में magnitude of velocity remains constant, speed remains constant, and non-UCM में magnitude of velocity does not remain constant. That is why in UCM you have only one acceleration called radial acceleration, whereas in non-UCM you have two linear accelerations called as tangential and radial, we consider. Is this much clear to all of you all? Yes, sir. Can I erase it now? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? Students? Yes, sir. Okay. So wait. Students, what is the strength of this batch? कितने students हैं ये batch में? So 40. 40 students. तो क्या 40 students attend करते हैं? हाँ? हाँ पियो? So like वो vary करता है. Like but ऐसा mostly 40 है strength. 45, 46, लेकिन 35. कितने स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं लेक्चर्स? स्ट्रेंथ क्या होती है? कोई भी लेक्चर्स को पकड़ो, फिजिक्स पकड़ो, केमिस्ट्री पकड़ो, मैथ्स पकड़ो, बायो में शायद सब में ज्यादा होगा, बायो में सबसे ज्यादा होगा. What is the strength, students? CPU is not answering also. So 25 only. Okay. Sir, done. Okay.
25 में से तो कुछ स्टूडेंट्स सो ही रहे, तभी जाके मैंने 3 स्टूडेंट्स को आई हैड केप्ट इन वेटिंग रूम, ओके, लेकिन उनको पता ही नहीं, फिर बाद में निकाल दिया, फिर भी पता ही नहीं चला कि उनको निकाल दिया मैंने, उनको पता ही नहीं है। दैट मींस व्हाट डू दे डू, दे एंटर इनसाइड एंड दे कीप देयर हैंडसेट स्विच्ड ऑफ, बंद करके रख देते हैं। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। पेरेंट्स को लगता है कि बेटा बेटी लेक्चर्स में है, दिस इज समथिंग रियली बैड। एंड व्हेन आस्क्ड नेट इशू, वी हैव अ नेटवर्क इशू, कॉमन हो गया वो। Okay, students, then let us move further. Students, we got the formula for acceleration, centripetal also, students. Now we go for certain more mathematical students. Abhi hamare formulas will be there, students. The first formula what we are trying to go for is, students, the maximum velocity for a car on a circular unbanked road. So we'll be going for the derivation of that. Before going for it, students, I want to question you all, students. मुझे बताओ, तुम्हारे laws of motion हो गया, students? Yes, sir. Yes, sir. मुझे ये बताओ, students, Neha, can you tell me how is force classified into? Force का classification बता सकते हो? Force को तुम कैसे classify करते हो? Yes, Neha, can you tell me? या पियो बोलो. Sir, are you asking the parameter or the components or? Sir, No, I'm not asking about. मैंने सिर्फ classification पूछा या bifurcation. Force को कैसे classify करते हो? Sir, into two parts. contact and non-contact. No, sir, no, sir. Real force and pseudo force. And in real force, two comes conservative and non-conservative. And non-conservative is known as contact force, conservative is known as non-contact force. क्या बात है पियो, तुम भाग रही है, रेसिंग रेस कर रही. नेहा, yes, what you said is absolutely correct. स्टूडेंट्स, ये देखो, फोर्स का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये दो चीजें को ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. फोर्स का क्लासिफिकेशन में एक आता है रियल फोर्स और सीरो फोर्स, और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये है एक सर्कुलर पाथ स्टूडेंट्स, ये है एक सर्कुलर पाथ, ओके, एंड थिंक दैट इज योर कार इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर अनबैंक्ड रोड. ये क्या है? सर्कुलर अनबैंक्ड रोड, एग्रीड? यानी बैंकिंग किया नहीं है, यानी उसको इंक्लिनेशन नहीं दिया है. हमें चाहिए फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर अनबैंक्ड रोड, और हमारा फॉर्मूला आना चाहिए mu s r g. Friends, can you tell me what does mu s stands for? Static friction. Coefficient. Coefficient of static friction. Will it have any unit? Students, does mu has any unit? No, sir. No, not at all. It's a ratio of two forces. Students, हो गया ना, फ्रिक्शन हुआ कि नहीं हुआ लॉज ऑफ मोशन में? Yes, I know. Okay, तो ये कोएफिशिएंट, हमें ये फॉर्मूला चाहिए. So this is the formula. This is the maximum velocity for a car to move on a circular unbanked road. Banking का मतलब पूरे रोड में, पूरे रोड सरफेस में उसके यहाँ पे इंक्लिनेशन नहीं थी. अभी ध्यान से सुनना. सोचो कि ये कार जो है, ये कार जा रही है सर्कुलर पाथ में, ओके. नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ द कार, और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ओके. Now students, ध्यान से सुनना. Suppose अगर कार पहले सीधी थी and all of a sudden, ध्यान से सुनना, you are along with your dad in a car and your dad takes a sharp left turn. Your dad takes a sharp left turn, students. तो तुम किस तरफ जाओगे? हाँ students, you will go towards right, यानी you will go towards your dad. Everybody, is it clear? Yes, sir. यानी तुम move करोगे to the right. Now उस time पे your dad asked you a question, बेटा why did you come towards me? मैंने जब ये sharp left turn लिया तो तुम right की तरफ क्यों आए? मैंने तो तुम्हें नहीं खींचा. दूसरी बात, ना ही तुम्हें किसी ने उस तरफ से धक्का दिया है कि तुम मेरी तरफ आओ, तो तुम मेरी तरफ कैसे आ सकते हो? This question was raised by a dad to you. So Neha, can you answer what made you to go to the right hand side when the car was going on the left hand side, Neha? Absolutely correct, Harshal.
Yes, Neha, can you answer? No, Harshal, it's not this. The previous answer was correct. Yes, we बोलो. Sir, an imaginary force is acting, pseudo force. Yes, students, इसको हम बोलते हैं pseudo force. The direction and source cannot be predicted. Yes. नेहा यहाँ पे पुश और पुल होगा ही नहीं. यानी यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? सीडो फोर्स होगा, इमेजिनरी फोर्स होगा. ध्यान से सुना, क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने स्टूडेंट्स. इफ अ कार इज गोइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव बीन पुश्ड टू द राइट हैंड साइड, उस टाइम पे तुम्हारे डैड ने क्वेश्चन पूछा, व्हाई यू आर कमिंग टू द राइट? यू कुड नॉट आंसर because you didn't find out anybody pulling you or anybody pushing you. Neha, did you find out anybody pulling you? No. Did you find out anybody pushing you? No. But then too also you went to the right. Yani that there was some force acting on you which made you to go to the right. Same question was raised to Isaac Newton. He also could not answer. So he said it, there is a force which is acting and that is called a pseudo force. Students, so ye ध्यान में रखना, force के अंदर pseudo force आता है. It's a imaginary force or a false force. और उसका अगर example चाहिए students, pseudo force का, so the example is force centrifugal. It's a vector. It's a radially outward force, students. This is radially outward force. ये ध्यान में रखना. और ये कभी experience होगा. Example कौन सा है? Force centrifugal. ये कौन सा force है? Radially outward force. ये force body कभी experience करेगा? कभी experience करेगा? When it was going with a high speed. Students, when the car was going in a high speed. That means when body is in non-inertial, so called as accelerated frame of reference. क्या ये clear हुआ students? Students, क्या ये clear हुआ सबको? Is this clear to Yes, all of sir. you? Yes, sir. तो देखो, जब भी accelerated frame of reference में हो गया नॉन इनिशियल, तभी जाके उसको बाहर की तरफ फोर्स मिलेगा. ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू दिस. तो ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? वो रेडियली इनवर्ट फोर्स है. नाउ अगर मैंने पूछा फोर्स सेंट्रीपिटल, तो ये हुआ रियल फोर्स. रियल फोर्स यानी जिसको ओरिजिन भी होता है और जिसको सोर्स भी होता है. फोर्स सेंट्रीफ्यूगल कौन सा हुआ? सर ये तो सीडो फोर्स हुआ. This is pseudo force. Imaginary force. How are these two forces? So there are two forces equal in magnitude, opposite in direction. इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम है. फोर्स सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड और फोर्स सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड क्या सेम है? हाँ सर सेम है. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? सर इसके 3 फॉर्मूलाज होंगे. आया ना? अब भी हम लोगों ने डिराइव किया स्टूडेंट्स. Yes, sir. अभी हम लोगों ने डिराइव किया. फोर्स सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या था? mv²/r. एक फॉर्मूला mv²/r, दूसरा m into v into omega, and the next one is m or omega square. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तीन फॉर्मूले. Yes, sir. Are these 3 formulas clear to all of you all? Yes, sir. तो दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन तुम राइट हैंड साइड किसकी वजह से गए? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गए. एग्रीड? तो ये ध्यान में रखना. नाउ लेट अस कम बैक टू दिस फॉर्मूला. हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर अ कार टू मूव ऑन अ सर्कुलर लेकिन अनबैंक्ड रोड. अनबैंक का मतलब क्या? हमने रोड को इंक्लाइन नहीं रखा स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कर्व सरफेस. आई हैवंट केप्ट रोड इंक्लाइन. स्लोप नहीं दिया है रोड को. I get it. It's plain surface. Now suppose if I say a car is moving on a circular track, listen carefully.
अभी हम क्या करते हैं, यही जो कार है स्टूडेंट्स, ये जो ट्रैक है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। यानी आई एम ट्राइंग टू गो फॉर 3 lanes, lane 1, lane 2, lane 3. Let us say this is lane 1, lane 2, lane 3, and let us assume that your car is in lane 2. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये lane 1 है, ये lane 2 है और ये lane 3. Your car is in lane 2. Lane 1 के अंदर स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, लेन 2 यानी 100 किलोमीटर पर आवर, लेन 3 इज 120 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ स्पीड लिमिट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ऑन द आउटर ट्रैक और इनर ट्रैक? ये सेंटर ऑफ द Inner ट्रैक, track. इनर ट्रैक। स्पीड हमेशा बाहर से होती है नेहा, स्पीड हमेशा बाहर। मुझे बताओ नेहा, गाड़ियों को ओवरटेक कैसे करते हैं? ओवरटेक राइट हैंड साइड से होता है या लेफ्ट हैंड साइड से होता है? Right. राइट से होगा ना, मीन्स योर आउटर ट्रैक विल ऑलवेज हैव मैक्सिमम स्पीड। नेहा अगर मैंने पूछा कैसे कैसे, तो तुम बोलोगे सर ध्यान से देखना नेहा, अगर किसी ने पूछा कैसे, तो कैन आई यूज माय फॉर्मूला v इज इक्वल टू r ओमेगा? हाँ, कैन आई यूज माय फॉर्मूला v इज इक्वल टू r ओमेगा? तो बोलेगा हाँ सर। क्या ये बॉडी, क्या ये कार, ध्यान से सुनना, क्या ये कार लेन 3, लेन 2, लेन 1 में विल इट गो विद कांस्टेंट स्पीड? यस, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ है। व्हाट इज द स्पीड लिमिट? 100। व्हाट इज द स्पीड लिमिट? 80। व्हाट इज द स्पीड लिमिट? 120। तो स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। आई गेटिंग इट? सो द बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हाँ या ना? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. UCM. So how is velocity and radius? How is velocity and radius? What kind of variation it is? Direct. मुझे बताओ किसका रेडियस ज्यादा है, लेन 3 का रेडियस ज्यादा है या लेन 1 का रेडियस ज्यादा है? Lane 3. Lane 3. तो वहां पे स्पीड ज्यादा होगी, अंदर की स्पीड कम होगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी ये तीनों लेन की स्पीड लिमिट है 80, 100 एंड 120। नाउ ध्यान से सुनना, नाउ वी मूव फर्दर अहेड। सपोज तुम्हारी कार जा रही है इन लेन 2, in lane 2. So what is the speed? What is the speed? You just said the speed is 100 kmph. Kmph का मतलब kilometers per hour. Agreed? It's going with 100 kilometers per hour. Now the answer sunna. Your dad is driving. Listen carefully, students. Your dad is driving. You are sitting beside your dad. Okay? दोनों belt पहने हुए हैं. I get it? Your dad is driving in lane 2, and lane 2 wants the car to be at 100. So your dad is driving with 100 kilometers per hour. But now you start challenging your dad. तुम डैड को चैलेंज करते हो, डैड हम जब ये सर्कुलर पाथ में आए तो वहां पे एक साइन बोर्ड था, वहां पे 100 किलोमीटर पर आने लगे, तो आपने स्पीड 100 रखी है। डैड क्या आप लेन 2 में रहते हुए कैन यू गेन स्पीड? इट्स अ चैलेंज टू यू, यू थ्रू अ चैलेंज टू योर डैड। योर डैड एक्सेप्टेड द चैलेंज, he kept the car in lane 2 but he gradually went on increasing the speed. Students, ध्यान से सुनना, your car is in lane 2, your lane 2 should have a speed of 100, but your dad ने 100 से increase किया, 102, 104, 105, 108. What is going to happen? So जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है, क्या होगा मालूम है? There will be a lot of screechy sound in your tires. अगर तुम ध्यान से विंडो की तरफ बैठे होंगे और तुम देखोगे ना, या तुम आवाज सुनोगे, तो तुम्हारे टायर्स के अंदर स्क्रीची साउंड आएगा। योर डैड विल बी होल्डिंग द स्टीयरिंग एंड द स्टीयरिंग इज वॉबलिंग एट दैट टाइम। यानी हो क्या रहा है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम स्पीड इस लेन में 100 था, तुमने जबरदस्ती तुम्हारे डैड को बोला कि डैड आप 100 से ज्यादा लेके जाओ, तो हो क्या रहा है? योर कार इज नाउ डिमांडिंग, your car is now demanding, please take your car outwards, because there is a force acting on a car. Which is that force? Centrifugal force, which is trying to drag car outwards. Why? Because you have increased speed. That means, are you in an accelerated frame of reference? Yes. Non-inertial. उस टाइम पे कार को डिमांड होता है कि भाई तू बाहर लेके आओ, लेकिन फिर भी तुम जबरदस्ती उसी लेन में जा रहे हो, तो हो क्या रहा है? टायर्स की स्क्रीची साउंड आ रही है। It can happen that the tires might burst.
because when you're trying to go with the speed greater than the permissible limit, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा inner wheel है, ये तुम्हारा outer wheel है, ये मैंने अगर कार दिखा दी students, think as if this is the back portion of the car, this is the back side of the car, and the car is going in forward direction. Students, ये आगे की तरफ, ये तुम पीछे से देख रहे हो, तो ये हुआ तुम्हारा इनर टायर, ये तुम्हारा आउटर टायर। स्टूडेंट्स, जैसे तुम्हारी स्पीड 100 से ज्यादा होगी, होगा क्या? लुक ओवर हियर, देयर आर रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द इनर टायर and there is a reaction force acting on the outer tire. Students, the reaction force on the inner tire will decrease as compared to outer at high speed. At students, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो अंदर वाले टायर्स को कम रिएक्शन मिलेगा, यानी उसका मतलब क्या हुआ? अंदर वाले टायर्स विल बी कमिंग लेस इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, बाहर वाले टायर्स विल बी फर्मली। तो क्या होगा? जैसे तुम्हारा स्पीड लिमिट थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, क्या होगा? योर कार विल नाउ, यस, योर कार विल नाउ टॉपल, योर कार विल नाउ टॉपल। समझ में आ रहा है? बाहर की तरफ चलिए। Are you getting it? Are you getting it, students? Means sir, the Yes, car sir. will be forced to go in lane 3, na? No, my dear, it will topple. तुमने जबरदस्ती ले फोर्स टू गो, तो फोर्स तो हो रहा है लेकिन तुम जाने नहीं दे रहे हो, तो एक हद तक वो नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स इतना कम हो जाता है, कार उछलना शुरू कर देगी और पूरी कार टम्बल होके जाती है। लुक एट फार्मूला 1 रेस कार्स। कभी देखा है फार्मूला 1 रेस? कभी देखा है? वो ड्राइवर जब भी उसी लेन में हाई स्पीड पे जाता है तो उसकी गाड़ी Yes पलटी sir. मारती है पूरी। हाँ हाँ, दैट इज okay. व्हाट इट इज। यानी द कार डिमांड्स कि उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। यानी जब भी तुम हाई स्पीड पे जाते हो तो तुम्हें बाहर की तरफ जाना होगा। अगर सपोज तुम्हारी स्पीड 100 है एंड सपोज ऑटोमेटिकली तुम्हारे डैड ने स्पीड कम कर दी 100 से 95, 90, 87, 85, you won't believe your car automatically will start coming inwards. Yani centripetal force. If a car is going with a constant speed, at that time what happens? The two forces are equal in magnitude in opposite direction. Centripetal, centrifugal दोनों act हो रहा है. Car is going with constant speed. Summation क्या हो जाएगा? Summation of both the forces acting on the car is 0. The car is going with constant speed. लेकिन बाई चांस अगर तुमने स्पीड बढ़ा दिया और उसी लेन में रहे तो तुम्हें टॉपल होगा। यानी what is the speed for toppling? Friends, what is the speed for toppling? Will it be equal to? Then say no, sir. If V is greater than V max, what's going to happen? Car topples. समझ में आ रहा है? If V is less than V max, then this is a safe speed. This is the safe speed. If V max is equal to this is the maximum, यानी ये लेन का स्पीड 100 मैक्सिमम है। अगर तुम 95 से जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन तुमने बहुत कम कर दिया तो तुम यहाँ पे आ जाओगे। यानी अगर स्पीड लिमिट 100 है और तुम्हें सेफली जाना है तो 95 रखो, तो वो हो जाता है सेफ स्पीड। लेकिन अगर तुमने मैक्सिमम 100 तक गए, लेकिन अगर तुम्हारी स्पीड मैक्सिमम से ज्यादा होगी तो कार टॉपल हो जाएगी। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. all of you have you understood the concept behind it? Yes, sir. Now अगर मैं क्वेश्चन रेज करूं तो ये कार जो सर्कुलर मोशन में जा रही थी, ध्यान से सुनना, जब भी उसका स्पीड 100 था या 101, 102, 103 जा रहा था, नॉट डायरेक्शन वेरी हाई, उस टाइम पे भी कार चल रही थी उसी लेन में। मुझे बताओ कौन सा फोर्स था जो कार को सर्कुलर मोशन में मूव करता रहा? तो तुम क्या बोलोगे? जैसे जैसे तो आपकी स्पीड बढ़ी तो मैंने टायर्स का आवाज देखा, टायर्स के अंदर स्क्रीची साउंड आना शुरू हो गया, यानी फ्रिक्शन होल्ड कर रहा था कार को। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही थी फ्रिक्शन वाज होल्डिंग द कार, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड पे फ्रिक्शन ने भी सरेंडर कर दिया। फ्रिक्शन ने बोला कि भाई अभी मैं कार को होल्ड नहीं कर सकता, भाई तू चले जा बाहर, नहीं तो तेरी कार पलटी हो जाएगी।
तो एक हद के बाद में फ्रिक्शन भी छोड़ दिया अपने आप को, फ्रिक्शन भी कम हो गया. तो इन दैट केस द कार, बिकॉज द रिएक्शन फोर्स वाज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. सो व्हाट वाज द रीजन फॉर द कार टू मूव, टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए फॉर कार टू परफॉर्म UCL, okay, you need real force, and that is called as force centripetal. Who was providing this real force? This real force provided by which force? Force of friction. समझ में आ रहा है? Friction was a cause for the body to move. अभी ध्यान से देखना. चलो, now suppose if I say car is going with 100, मुझे बताओ ये कार सर्कुलर मोशन क्यों जा रहा था? तो मेरे फ्रिक्शन की वजह से. कैसे? अगर बाय चांस आगे ऑयल होता, तो would the car would have kept in the circular path or would have got tangentially outwards? Tangentially outwards. यानी what was the reason for the car to perform circular motion? कौन सा force ये था? Friction force. Friction force a real force? Yes. It's a contact force. Real forces are classified into what? Conservative and non-conservative. Conservative are non-contact force and non-conservative are contact force. So friction is a contact force. तो ध्यान से देखना students, for car to perform uniform circular motion कौन सा force चाहिए तुम्हें? Centripetal force चाहिए. ये centripetal force कौन provide कर रहा है? Force of friction provide कर रहा है. What's the formula for centripetal force? What's the formula for centripetal force? So the formula for centripetal force is mv square by r. What exactly the force of friction I'll consider? Let us say this is r is the radius of the circular path. What is the force of friction? So force of friction will be equal to mu s into n. What does n stands for? Normal reaction force. So can I say mv square by r is equal to mu s m into g. M will get cancelled. What's the formula for Vmax? Under root mu r g. Can I say this becomes a formula for maximum velocity of a car? क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So when sir. somebody asks you what is the maximum velocity of a car to move on a circular unbanked road, then तुम्हारा answer होना चाहिए. So the maximum velocity is under root mu rg. What is the safe velocity? Less than under root mu rg. What is the velocity for it to topple? Greater than under root mu rg. Agreed. What force tries to drag the car in the outward direction? A pseudo force called centrifugal force. When is a centrifugal force experienced by the body? When the body is in non-inertial frame of reference. How is centripetal and centrifugal force? Both of them are equal in magnitude and opposite in direction. When a body is performing uniform circular motion or circular motion, do you need force centripetal? Yes. So what is the cause for the force centripetal for this part of it? Force of friction. Friction means it's between the tires and the road. Okay, if the conditions of the tires are good and the road is good, the car will be holding himself properly. लेकिन अगर टायर्स एकदम सही हो, टायर्स नए हो लेकिन रोड अगर सही नहीं हो, students, a simple example, your tires are really good enough, but all of a sudden the road is oily, friction is reduced. That's why you must have seen जब भी first rains होते हैं, first or second rains होते हैं, students, have you seen maximum bikers skid? जब भी बारिश होती है तभी Yes, अगर sir. किसी बार the skid, what's the reason? You see many people skidding on the road पहले बारिशों में. क्यों? क्योंकि जब भी समर में होता है तो समर का क्या, बिकॉज ऑफ द कंसिस्टिंग एग्जॉस्ट गैसेस, उसके अंदर ऑयल का लेयर्स होता है. वो ऑयल एक लेयर फॉर्म कर लेता है रोड सरफेस के ऊपर थ्रू आउट इन समर. जैसे पानी गिरता है तो ऑयल सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन इस इन दैट केस ऊपर की तरफ रहता है, फ्लोट करता है. ये बाइक वालों के लिए और परेशानी होती है, भले टायर्स नए हो लेकिन फ्रिक्शन कम हो गया, दे स्टार्ट स्किडिंग. So friction cannot be dependent. You can't trust mu. Hello, mu cannot be trusted all the time. अगर तुम्हारे टायर सही हो लेकिन जरूरी है कि आगे वाला रोड सही है. तुम कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो तो तुम्हें पहले से पता है कि रोड सही है? नहीं, यू डोंट नो. हु नोज वहां पे टैंकर गिरा हुआ है और वहां पे ऑयल पड़ा हुआ है. तो you can't depend on to mu completely. That's why always you have to be careful while driving on car vehicles. Overtake करने के टाइम से राइट से ओवरटेक करते हैं, लेफ्ट का कम स्पीड होता है, राइट का ज्यादा स्पीड होता है. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल फॉर, और ये किसके लिए बता रहा हूँ, फॉर राइट एंड ड्राइव कार्स.
ये हम इंडियन कार्स के बारे में बता रहा हूं मैं, वही तुम अब्रॉड में जाओगे तो उल्टा हो जाता है। Are you getting it? Can I erase the Yes. students? Yes, sir. Okay, now we go for students. Next concept is banking of roads. Students, anybody knows what exactly banking of road means? तो बता सकता है? What exactly mean by the term banking of roads? Banking of roads का मतलब students ध्यान से सुनना. Outer end of road is raised as compared to inner end. Thus, width of road forms angle theta with the horizontal, and h is less than L. Width is L. Width is L, students. H is less than L. Therefore, h by L is also very small. Therefore, sine theta will be nearly equal to tan theta. Students, this angle theta is called angle of banking. क्या ये clear हुआ student statements? Sir, width of the road forms angle theta means what? What is the width of the road? तुम्हारे घर के बाहर रोड देखो, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो width पता चलता है? width का मतलब क्या है? हाँ, Breadth. तुम जो बिल्डिंग में हो, तुम्हारे सामने भी शायद कोई बिल्डिंग होगी, है ना? Yes, sir. तो दोनों बिल्डिंग के बीच में रोड होगा, Yes, sir. तो वो हुआ width. हाँ, है ना? Okay, sir. Yes, sir. The outer end of the road, width का outer end of the road is raised as compared to the inner end. Are you getting it? Thus, width of the road forms an angle theta with the horizontal. यानी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ बैंकिंग का मतलब क्या?
Please pay attention. How do we go for this? Let us understand this part of it very clearly. Students, ये देखो, हम वापस पहला केस में जाते हैं. Students, ये circular track है. Everybody, please listen carefully. How to understand this concept of angle of banking, students. Why you're saying that? Mira Road, what's the reason? क्या हुआ? Sir, I just wanted to know, like, No idea why. sorry, sir. No idea. Okay, okay, sir. Just wanted to know. हाँ मैं TP बैठे थे. Okay. Now, students, listen carefully. When I speak about for angle of banking के लिए, students, listen carefully, students. यहाँ पे अगर मैं ये रोड को देखता हूँ, students, please pay attention. तो ये जो रोड है वो सर्कुलर मोशन जा रहा है. अभी फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जाना है पॉइंट A टू पॉइंट B. लिसन करते हैं, ये तुम्हारा पोजीशन है और तुम्हारा डेस्टिनेशन ये है. ओके, और एंड द स्पीड ऑफ द कार लिमिट इज 80 किलोमीटर पर आवर. नेहा, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. स्पीड ऑफ द कार इज 80 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो तुम मैक्सिमम 80 से जा रहे हो, लेकिन 80 से ऊपर अगर तुमने स्पीड ले लिया तो तुम्हारी कार टॉपल होगी. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ध्यान से सुनना. What happens is all of a sudden you get a call at night hours. You are staying at point A and you get a call at night hours, okay, from a person who's very near and dear to you from place B. Okay, there's an emergency, please come early, please come fast. रात के समय उनका फोन आता है, please we need a help and can you come early as possible. तो तुम अपने जगह से निकलते हो, अपने घर से निकलते हो, तुम्हारा पाथ सर्कुलर है, लेकिन वहाँ पे स्पीड लिमिट क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर. टाइम ये लेते हुए डिस्टेंस में पता है तो तुम्हें 2 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए. लेकिन अगर किसी ने बोला कि अर्ली जाना है तो नाउ यू विल टेक लेस टाइम टू रीच. अगर तुमने कम टाइम कर दिया तो तुम जानबूझ के अपनी स्पीड बढ़ाओगे, आया ना? Yes, sir. और स्पीड बढ़ाने से क्या होगा? शायद तुम टॉपल भी हो सकते हो. उसको बचाने के लिए तुम वहां पे एक्सीडेंट में आ जाओगे, वो सामने से आएगा तुम्हें बचाने के लिए, है ना? तो ये कभी गलती मत करना. सो नाउ इसी चीज को अच्छी तरह से करने के लिए नाउ द सेम. देखो ये हुआ विड्थ ऑफ द रोड. स्टूडेंट, दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड. ये है लेंथ ऑफ द रोड. ये है मैंने विड्थ ऑफ द रोड. जब ये विड्थ ऑफ द रोड है और विड्थ स्ट्रेट एकदम प्लेन सरफेस है तो तुम 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो ना. फॉर एग्जाम्पल नेहा को मिलता है IIT बॉम्बे में मिलता है और उसने सिविल इंजीनियरिंग कर लिया वहां से, और पीयू को इमरजेंसी हुई A टू B पे जाने के लिए, किसी को मदद करने के लिए. तो उसने नेहा ने क्या किया? उसी रोड को विड्थ वही रखा. स्टूडेंट ध्यान से सुनना, विड्थ वही रखा. नेहा डिडंट फिजिटेड विद द विड्थ ऑफ द रोड. नेहा डिडंट फिजिटेड विद द लेंथ ऑफ द रोड. नेहा डिडंट फिजिटेड विद एनी ऑफ द नियर बाय कंस्ट्रक्शन, डिमोलिश करके नहीं. उसने क्या किया नेहा ने मालूम है? ये आउटर एंड ऑफ द रोड है, ये इनर एंड ऑफ द रोड है. उसने क्या किया? सिर्फ आउटर एंड ऑफ द रोड को रेज कर दिया एज कंपेयर टू इनर by a very small angle. Student, theta is very small. It can be 1 degree, 1.5 degree, 2 degrees, at the most 3 degrees. So beyond नहीं, ज्यादा उसने हाइट नहीं ली है. समझ में आ रहा है? यानी एक टाइप का स्लोप बना दिया, पूरा सर्कुलर पाथ एक स्लोप में आ गया. अभी क्या होगा मालूम है? जैसे तुमने बैंकिंग कर दिया, यानी आउटर एंड ऑफ द रोड इज रेस्ड with respect to inner. तो कहना ऐसे, पहले ये तुम्हारा width of the road था, अभी तुम्हारा width of the road ये हो गया. लेकिन is it raised? Yes, at a height h Yeah. with respect to the horizontal. But is this theta very large or very small? Theta is small. Theta is small. Why theta is small? Because h is less than L. Therefore, h by L is still very small. Theta is also very small. When theta is small, sin theta can be nearly equal to tan theta. Why not? For smaller angles, the value of sin theta is equal to tan theta. Students, trigonometrical की book होगी ना, या तुम्हारे log tables की book होगी. Find the value of sin of 1.2 degrees and find out the value of tan of 1.2 degrees. दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा. स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं बैंकिंग. अभी ये बैंकिंग से हुआ क्या? ये बैंकिंग से हुआ क्या? नेहा ने जो बैंक रोड बनाया उससे हुआ क्या?
उससे ये हुआ कि पीयू जब भी अपने घर से निकल के बी पे पहुंच रही है, नाउ शी कैन मूव विद स्पीड greater than 80, but she will not overturn. क्यों? क्योंकि ओवरटर्न के टाइम पे होता क्या था, टॉपलिंग के टाइम पे होता क्या था स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है? जब भी पीयू 80 से स्पीड अगर बढ़ाती है अनबैंक्ड रोड पे, तो अंदर वाला टायर कम कांटेक्ट में रहता है, बाहर वाला टायर फिक्स होता है, यानी वो फॉर्मली कांटेक्ट में है, अंदर वाला टायर कम कांटेक्ट में होता है। देखो आई गेटिंग इट? तो टॉपल होगा। लेकिन फिर देखो बैंकिंग देने से हुआ क्या, बैंकिंग देने से हुआ क्या, टायर बाहर वाला ऊपर हो गया, अंदर वाला नीचे रह गया। तो क्या ये बाउंस करेगा, ये वॉबल करेगा टायर? नहीं करेगा, हमेशा फर्म रहेगा। कैन यू गेन स्पीड? Yes, you can gain speed. Same length of the road, same length of the road, same width of the road. Just by raising the outer end of the road or the width of the road, the speed now can be raised from 80 to 100. Now you will take 2 hours to reach? No, she'll take a time less than that, and she can save somebody's life over there. Got it, Pio? Yes, sir. Be thankful to Neha. Say thanks to Neha. Thank you, Neha. अरे नेहा से मोस्ट वेलकम। नेहा बोल दो Most welcome. ओके। लेकिन नेहा तुम्हें इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है? Sir, medical. तो चलेगा ना, हम सिविल इंजीनियर करने के बाद में मेडिकल में जाते हैं। ओके Yes, sir. ओके, डजंट मैटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है तुम्हारा एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अगर तुम्हें ये बात सबसे पहले पूछेंगे कि बैंकिंग की जरूरत क्या है, तो तुम्हें सीधा ये बोलना है कि हम म्यू को ट्रस्ट नहीं करते। Mu cannot be trusted. Mu means coefficient of friction, static friction cannot be trusted. Are you getting it? The tires are good, maybe road is not good. Are you getting it? Or the road is good but the tires are not good. अभी suppose मैं टूरिस्ट व्हीकल लेके चला जाता हूँ, लेकिन वो टूरिस्ट व्हीकल के टायर्स ही बरोबर नहीं है, टकले हैं, तो I can skid. My car will skid on a circular track. Are you getting it? So this is banking of roads. So banking of road takes place on the roads. Does banking takes place on railways also? Yes. स्टूडेंट्स, कोई रेलवे लाइन जब भी टर्निंग पे जाती है ना स्टूडेंट्स, तो टर्निंग पे ध्यान से सुनना, जब भी ट्रेन टर्निंग्स पे होती है ना, अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस पे कहाँ पे जाते हो और ट्रेन टर्निंग्स पे होती है, तो वो टर्निंग पे स्टूडेंट्स उसकी स्पीड लिमिट ज्यादा नहीं रखते हैं। अगर सपोज टर्निंग है स्टूडेंट्स, और अगर रेलवे ट्रैक्स बैंक नहीं किया हुआ है, द गार्ड ऑफ द ट्रेन कांट इंक्रीज स्पीड, उसको स्पीड नॉर्मल रखने की जरूरत है। अगर बाय चांस वो स्पीड बढ़ा देता है तो ट्रेन डीरेल हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा कर्व ट्रैक्स के ऊपर भी बैंकिंग होता है। उसका मतलब द आउटर ट्रैक इज रेस्ड एज कंपेयर टू इनर। बैंकिंग टेक्स प्लेस इन रेलवे लाइंस आल्सो। I don't know how many of you all know it, or you can ask your dad who travels outside. You can ask your dad, hey dad, if you go towards the town side beyond Bombay Central, ट्रेन से अगर तुम जाते हो, तो वहां पे देखो, वहां पे ट्रैक कर्व है। स्टूडेंट्स, अगर एक दफे अगर तुम एक्सपीरियंस करते हो, तो व्हेन यू गो टू नरीमन पॉइंट, इफ यू वांट टू सी द क्वींस नेकलेस, ओके, पारसी डेयरी की पेस्ट्रीज या आइसक्रीम्स खाने जाना है, तो Marine Drive, no, sir? मरीन ड्राइव। ओके, तो वहां पे जब भी तुम जाओगे, तो ट्रेन से अगर तुम जाओगे ना स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली ट्रेन कर्व पे होती है। तो कर्व के टाइम पे क्या तुम्हारा बैंक किया हुआ रहता है, और तुम्हें फील होगा अगर तुमने बॉटल रखी ना स्टूडेंट्स, ट्रेन के अंदर ग्राउंड के ऊपर नीचे बॉटल रखी, तो बॉटल रोल होके एक तरफ चली जाती है। उतना Yes, बैंकिंग sir. उतना बैंकिंग दिया हुआ है। यानी वो बैंकिंग क्यों देते हैं? क्योंकि अगर बाई चांस वो ट्रेन वहां पे हाई स्पीड से जाती है, तो वो ट्रेन डिरेल नहीं होगी। Yes, in roller coaster also it is given banking. Absolutely correct. Roller coaster में भी ऐसा बैंक किया है। Exactly same banking takes place for aircrafts. Students, कभी देखा है? Banking is done in air also. For example, अगर कोई फ्लाइट में तुम जा रहे हो और उस फ्लाइट को टर्न लेना है स्टूडेंट्स, अगर फ्लाइट को टर्न लेना है, तो ये इनर विंग है और ये आउटर विंग ऑफ द एयरक्राफ्ट है स्टूडेंट्स, ये दोनों विंग्स है। ओके, तुम्हारा एयरक्राफ्ट सीधा जा रहा है स्टूडेंट्स, योर एयरक्राफ्ट इज गोइंग स्ट्रेट। लेकिन अगर उसको टर्न लेना है, तो टर्न करने टाइम क्या होगा, ये जो ब्लू हैंड है वो नीचे हो जाएगा और ये रेड ऊपर हो जाएगा।
अगर सपोज पायलट ने प्लेन को बैंकिंग नहीं दिया और वो सीधा ही टर्न लेने लगा, तो व्हाट हैपेंस? द एंटायर एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई इन एयर, टॉपल हो सकता है। समझ में आ रहा है? यानी स्टूडेंट्स, अगर कभी भी कर्व ट्रैक पे जाना हो एयरक्राफ्ट को, या कर्व पाथ पे जाना हो, सो इवन विंग्स को भी बैंकिंग देते हैं। द इनर विंग इज इन दिस मैनर, और वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। समझ में आया बैंकिंग कहाँ कहाँ पे होता है? रोड्स पे भी होगा, यानी तुम्हें जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, the students you might come across on roads also, they might give you that a meter gauge train. So the length of the width of the track is 1 meter, that is L, is raised, the outer rail is raised as compared to inner by an angle so and so, तो तुम्हें theta दिया होगा. And why do we go for angle of banking? Just to gain speed and avoid toppling. Now suppose if I ask you, can you find out the formula for maximum speed, students? Maximum speed for a car on a banked circular road. लेकिन यहाँ पे हम लोग ने फ्रिक्शन को एलिमिनेट किया है, फ्रिक्शन एलिमिनेटेड, यानी हम फ्रिक्शन को नहीं कंसिडर कर। तो नाउ इफ आई वांट टू गो फॉर द फॉर्मूला, व्हाट आई विल डू? तुम बोलोगे सर पहले तो रोड को बैंकिंग में ला लो, तो ये तुम्हारा ये डायग्राम मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ स्टूडेंट्स, आई गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा एंगल थीटा है। सपोज अगर मैंने तुम्हें कार दिखा दी, ये कार है, ये इनर टायर है, ये आउटर टायर है, और कार ऐसे परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो ये पूरा बैंक रोड है और कार इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये पीछे का रेयर पोर्शन है कार का, है ना? यहाँ का रिएक्शन फोर्स और यहाँ का रिएक्शन फोर्स अभी सेम हो जाएगा। प्लीज ये मत सोचो कि कार ऊपर नीचे जा रही है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, लॉज ऑफ मोशन का डायग्राम नहीं है। ये कार जा रही है सर्कुलर ट्रैक में स्टूडेंट्स, यानी पूरे साइड पे पूरे जगह पे ये बैंकिंग दिया हुआ है स्टूडेंट्स। एवरीवेयर द बैंकिंग इज गिवन एंड द कार इज गोइंग ऑन अ स्लोप, द कार इज गोइंग ऑन अ स्लोप स्टूडेंट्स, इट्स गोइंग ऑन अ स्लोप, आउटर साइड इज रेज्ड। समझ में आ रहा है? और ये बैक पोर्शन है कार का, दिस इज द बैक साइड ऑफ द कार। नाउ इफ आई से व्हाट इज बैंकिंग, ये तुम्हारा हाइट है, ये तुम्हारा विड्थ ऑफ द रोड है। उसी को अगर मैं मेजर करूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा आउटर एंड ऑफ द टायर, ये तुम्हारा इनर एंड ऑफ द टायर, कहने से द आउटर एंड ऑफ द टायर इज रेज्ड एज कंपेयर टू इनर बाय एन एंगल थीटा। अरे हाँ सर, ये तो दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। द विड्थ ऑफ द रोड, कहने से, इज नथिंग बट दिस बिकम्स योर डिस्टेंस बिटवीन द टू टायर्स। यस सर, है ना? एंड ये तुम्हारा h बाय l हो जाएगा। यस, जो ये था अभी ये हो गया ट्राइंगल इज सिमिलर। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? ये देखो, ये इनर व्हील ऑफ द टायर, ये आउटर व्हील ऑफ द टायर, आउटर व्हील इज रेज्ड। वैसे ट्रैक्स के ऊपर इनर ट्रैक है ना आउटर ट्रैक। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है बैंकिंग? ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू गो फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड। फ्रिक्शन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये अभी मैं पूरी कार ड्रॉ नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, ये इंक्लाइन प्लेन ले लिया स्टूडेंट्स, ये थीटा ले लिया है, और मैं कार को एक पॉइंट मास ले लेता हूँ। इज योर कार परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन? यस। फॉर सर्कुलर मोशन व्हिच फोर्स यू नीड? फ्रेंड्स, फॉर द कार टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, सेंटर इस तरफ जा रहा है, कार इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सेंटर इज रेडियली इनवर्ट, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? फोर्स सेंट्रिपेटल। तो यहाँ पे भी जब ये कार यहाँ पे है तो कौन सा फोर्सेस एक्ट हो रहा है? सर mg नीचे की तरफ एक्ट होगा, वेट ऑफ द कार। ये कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, विल यू रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और विल यू रिजॉल्व mg? हाँ स्टूडेंट्स, mg। mg को रिजॉल्व करेगा तो वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा माय डियर। कार ऊपर नीचे थोड़ी जा रही है, सॉरी सर। इट्स गोइंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन स्टूडेंट्स। कार मूविंग, ये ध्यान में रखना, अलोंग। ओके, और यू कैन से
car moving on circular path along banked road, यानी वो ऐसे जा रही है स्टूडेंट्स, ये देखो ये बैंकिंग किया हुआ है, थ्रू आउट ऐसा बैंकिंग किया हुआ है, सर्कुलर पाथ है लेकिन बैंक है, सो द कार इज गोइंग इन दिस मैनर, सर्कुलर में जा रही है। तो यहाँ पे तुम किसको रिजॉल्व करोगे? एन को रिजॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, ना कि एम जी। अगर मैं एन को रिजॉल्व करूंगा तो देखो ये दो फोर्स होंगे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा करने से दिस बिकम्स थीटा, ये भी थीटा हो गया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फ्री बॉडी डायग्राम। Yes, sir. नाउ कैन आई रिजॉल्व दिस एन? तो ये क्या हो जाएगा सर? ये होगा एन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा। Is your n sin theta is a force of centripetal? Yes, n sin theta is simply force of centripetal. Is your n cos theta balances mg? Why not? Can I equate the two equations? Yes, n sin theta is force of centripetal. So can I say mv square by r divided by n cos theta balances what? mg. Can I divide the two? Yes. अभी देखो क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है? n and n will get cancelled. Mass of the car also will get cancelled. V square upon Rg is equal to what? Tan theta. So what is V? Under root Rg tan theta. This becomes your formula for maximum speed of a car on a circular unbanked road. But are we considering friction? No. ये formula में mu नहीं आ रहा है। क्या ये formula clear हुआ students? Yes, sir. Students, all of you all I'm speaking about, it's only Veer who's responding it. What about the rest of the students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anaita, getting it, Anaita? Yes, sir. Farhan, what about you? Farhan, getting it? Yes, sir. Aishman, Harshal, Izar. Yes, sir. Izar getting it? Okay, Kushali, what about you, Kushali? Yes, sir. Okay, fine. Roshika, Shubh, Yes, sir. Yes, sir. Pio, Oj, Nikhil, Oj and Nikhil, Sir. Neha. Yes, sir. Okay. And students, ये ध्यान में रखना, जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो फॉर अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर बैंक्ड रोड, not considering friction, तो what's the formula? V is equal to under root Rg tan theta. और बहुत easy है स्टूडेंट्स, ये तो कैसे डिराइव करते हैं वापस से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स। कार ऐसा नहीं है कि स्लोप के ऊपर नीचे जा रहा है स्टूडेंट्स। तुम लोग ने फ्री बॉडी डायग्राम में देखा होगा, तुम लोग ने देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। हमने पुल्ली से बांधा हुआ है और फिर धागे से खींच रहे हो, ये ऊपर नीचे, इट्स नॉट गोइंग अप एंड डाउन द इंक्लाइन प्लेन। नहीं, अगर मैं इसका डायग्राम और इफेक्टिवली अगर मैं बता सकता हूँ तो ऐसे मैं दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, इट्स लाइक दैट। तो ये जो कार है ना, कार वो ऐसे जा रही है, ये पाथ आगे और बढ़ रहा है। I getting it? It's going along a circle. It's going along a circular path. ऐसे along the incline plane. It's not going up and down. It's going along the incline. समझ में आ रहा है? और ये हुआ एंगल ऑफ बैंकिंग। Is this clear? यानी पूरा एक ग्राउंड है स्टूडेंट्स जहाँ पे सारों में तुम्हारा ऐसा एंगल ऑफ बैंकिंग दिया हुआ है। Getting it? It's angle of banking. It's going on to it. It's like that. तो जब भी कार एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे मिल रहा हो तो यहाँ पे उसको मैंने पॉइंट मास ले लिया, वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस परपेंडिकुलर सरफेस, ये थीटा तो ये थीटा, एन को रिजॉल्व करना है, एमजी को रिजॉल्व नहीं करेगा स्टूडेंट्स। अगर तुम एमजी को रिजॉल्व करोगे, हेलो स्टूडेंट्स, अगर तुमने एमजी को रिजॉल्व कर दिया तो ये तुम्हारे कंपोनेंट्स होंगे ना, यानी ये एमजी साइन थीटा बॉडी को नीचे लेके आएगा। मुझे अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन चाहिए, ये तो अप एंड डाउन के लिए होगा स्टूडेंट्स, एमजी अप एंड डाउन के लिए होगा।
मुझे सर्कुलर मोशन चाहिए तो मुझे 4 सेंटीमीटर चाहिए, 4 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल है, तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए तो मुझे n को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना कि mg, क्योंकि mg को रिजॉल्व करूंगा ना स्टूडेंट्स, तो am I getting any horizontal force? देखो ये मुझे ये चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ये है मेरा। अगर मैं mg को रिजॉल्व करूंगा तो मुझे ये नहीं मिलता है, मुझे ये दो फोर्सेस मिलते हैं। तो ये फोर्स लाने के लिए मैं किसको रिजॉल्व करूंगा? हाँ सर, आप n को रिजॉल्व करो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तुम्हारा थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, तो n cos थीटा, n sin थीटा। n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg कर रहा है। n in will cancel है, tan theta is equal to v²/rg. So what is v? √rg tan theta. अब बताओ, is this theta very large or very small? Well, sir, theta is very small. So can I say tan theta will be nearly equal to sin theta? Yes. And what is sin theta? Opposite upon hypotenuse. So can I write on this in terms of h/l also? Huh, students? Yes, sir. Okay. And that's the formula for maximum speed. But did you consider friction over here? No, friction is eliminated. Mu यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, लेकिन अगर मुझे अभी कार मैक्सिमम स्पीड में जानी है तो म्यू मैं यूज कर सकता हूँ। Mu helps me to support motion. That's why you must have learned it. Friction not always is harmful. At times it is useful also. That's why there are useful friction also. Agreed, students? Yes, sir. Okay, can I erase this? Students, क्या मैं इसको erase कर दूँ? Yes, sir. Okay, fine. So students, today you did a lot of derivations. A few more derivations are left for this chapter, okay? And it's still, if it's a two-dimensional motion, students, after you have to take that. So mostly in the next lecture, we'll try to go ahead with more number of problems on this, okay? Today we'll wind up over here. Taking next time, students, please see to that I want you all to refer your books properly, go through vector products properly, go through your mathematical formula, and go through the formulas of circular motion properly, okay, students? And avoid missing out lectures. Is that clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Next lecture will be continuing further. If I'm picking up the other derivation, students, it will be longer enough. Okay? Chalo, take care. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. Merry Yeah. Yes, sir. Christmas, Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Have a good day, sir. Yeah, same to you all. Merry Christmas, sir. Merry Christmas. No, kinematics को है weightage.